अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, आप देख रहे हैं हेलन फालिया न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। ख़वातीनो हज़रात, एक तरफ इसराइल की बर्बरियत और जुल्म सितम का बाज़ार गर्म है तो दूसरी तरफ आखिरकार OIC ने अपना इजलास बुला लिया है। इजलास में तमाम ममालिक जो OIC का हिस्सा हैं उनके वज़राए ख़ारजा ने अपने अपने ख़यालात का इजहार किया। उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक ऐसी स्टेटमेंट जारी की जिसमें तमाम तर ममालिक ख़ासतौर पर अरब और उम्मत मुस्लिमा को एक इम्तिहान में डाल दिया है। आपको शाह महमूद कुरैशी की क्लिप भी दिखाएंगे। नाजरीन, यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि आज उनकी बातचीत का अंदाज़ दूसरी तकारीर की तरह या दूसरी जिस तरह वो अपनी गुफ्तगू का इजहार करते हैं उस तरह नहीं था। उनकी बातचीत का अंदाज़ और ट्यून बता रही थी कि उन्होंने पूरी उम्मत मुस्लिमा के ज़मीर को जो है वो झंझोड़ा है। साथ ये भी कहा कि हम तैयार हैं। जी नाज़रीन कराम, उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही अल्फाज अदा किए कि हम इस वक्त फ़लस्तीन की अपने मुसलमान बहन भाइयों की खिदमत के लिए, उनकी मदद के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उनके ऊपर जितने भी मज़ालम इसराइल जो है वो डहा रहा है उसके ख़िलाफ़ हम सीसा पलाई दीवार बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम अपने अल्फाज और तमाम तर बयानियाँ और OIC की अदालत में रख चुके हैं। अब इस पर फैसला आप सब ने मिलकर करना है। जब शाह महमूद कुरैशी ये बातें कर रहे थे, कुछ ममालिक के मुंह तो खुले के खुले रह गए, लेकिन कुछ ममालिक के चेहरे खुशी से आप दीदा हो गए कि शुक्र है उम्मत मुस्लिमा की वाहिद एटमी ताकत पाकिस्तान में इतनी हिम्मत और जुरत है, और वो इस जुरत का मुजाहरा भी कर रही है कि आओ हम अपने फ़लस्तीनियों पर जुल्म और बर्बरियत पर उनकी मदद करते हैं। आओ हम सब मिलकर के अपने किबला अव्वल की हिफाजत करते हैं। ये कोई पहली दफ़ा नहीं कि पाकिस्तान इससे पहले भी फ़लस्तीनियों की मदद कर चुका है। ये बात शाह महमूद कुरैशी ने OIC के इजलास में वाज़े तौर पर अपना पॉलिसी बयान रिकॉर्ड करवाया। नाजरीन कराम, इस पर एक और अहम बात जो करना लाजमी है वो ये है कि OIC का इजलास हो रहा था तो दूसरी तरफ इसराइल में भी एक इजलास जारी है। ये इजलास सिक्योरिटी के हवाले से बहुत बड़ा लाजमी और अहम इजलास उनका, इसमें इसराइली सारे आपस में साथ जोड़ कर बैठे हुए हैं। उन्होंने क्या बात डिस्कस करनी है? उन्होंने सिर्फ एक ही बात डिस्कस करनी है कि हमने अब फ़लस्तीनियों के ऊपर किस तरह जुल्म के पहाड़ जो है वो हमने गिराने हैं, क्योंकि हमने तो इंटरनेशनल मीडिया की आवाज़ जो है वो भी बंद कर दी है, जो हमारी कवरेज करके पूरी उम्मत मुस्लिमा और पूरी दुनिया को दिखा रहे थे। हमने उनकी आवाज़ तो बंद कर दी है। कल जिस तरह उन्होंने वहाँ पर जो गज़ा में टावर था उसको 4 मिसाइल दाग कर उसको वो गिरा दिया है। अल जज़ीरा इंटरनेशनल समेत 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के कैमरे और तमाम तर मशीनरी और जितनी भी इक्विपमेंट थी सबको तबाह बर्बाद कर दिया है। अब उम्मत मुस्लिमा को इस पर बहुत जल्द फैसला लेना होगा। ये ना हो कि OIC का इजलास महीना तक जारी रहे। इसकी सारी तफसीलात शाह महमूद कुरैशी ने क्या क्या बातें की और वो किस जगह पर और किस मुकाम पर इस वक्त खड़े हैं, आप इस सारी वीडियो को देखें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। पाकिस्तान ने OIC में अपना हक अदा कर दिया है। पाकिस्तान के साथ अगर उम्मत मुसलमान सऊदी अरब है, अमारात है और जितने भी मुसलमान ममालिक हैं, अगर सब मिलकर इसराइल का मुकाबला करने के लिए निकल आएँ तो वो वक्त दूर नहीं है जब इसराइल, कश्मीर और पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है वो आज़ाद हो जाएगी। और यहाँ पर एक बात बताता चलूँ, बड़े अफसोस की बात है कि इसराइल एक छोटी सी आबादी का मुल्क जो है वो इस वक्त इतना बड़ा मार्का लड़ रहा है और इतनी ज़्यादा बर्बरियत का शिकार है, और अमेरिका भी उसका साथ दे रहा है। वो अमेरिका जो सबको दुश्मन कहता था, सबको दहशतगर्द कहता रहा है, आज अमेरिका की ज़ुबानें भी खामोश हैं। जी नाज़रीन कराम, आप इस वीडियो को देखें और अपने ख़यालात का इज़हार कमेंट में करें। उम्मीद है आज की वीडियो हमारी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। Pakistan is appalled by the sheer magnitude of illegal, disproportionate and indiscriminate use of force, tyranny and injustice being perpetrated by the Israeli occupation forces against defenseless Palestinians. There are no words strong enough to condemn the systematic and barbaric crimes against the Palestinians. The deteriorating conditions in the occupied Palestinian territories due to the illegal practices of Israel, the colonial policies and its continued aggression, siege
and collective punishment are sickening. The indiscriminate use of force by Israeli forces against defenseless Palestinians is tantamount to grave violations of principles underpinned in international law, including international humanitarian and human rights law. In the wake of the deteriorating conditions of the people of Palestine, my Prime Minister Imran Khan, has spoken with the custodian of the two holy mosques, King Salman bin Abdul Aziz, Turkish President Recep Tayyip Erdogan, and the President of Palestine, President Mahmoud Abbas. I've also been in touch with my key regional counterparts, including Brother Riyad al-Malki. The latest spate of Israeli aggression cannot be justified or condoned. At this somber juncture, we reaffirm our unflinching solidarity with the government and people of Palestine, valiantly defending their legitimate rights. We salute their courage in the face of unabated Israeli atrocities and preserving their Arab and Islamic identity. Mr. Chairman, distinguished colleagues, Pakistan condemns in the strongest possible terms the continuing airstrikes by Israel in Gaza that have resulted in deaths and injuries to many innocent Palestinians. Pakistan also condemns in the strongest possible terms attacks on innocent worshippers in Al-Aqsa Mosque, violating the very sanctity of Qibla Awwal. Death and destruction in the holy month of Ramadan during Eid al-Fitr is unacceptable. Endless, senseless violence must end. The respect for sanctity of religious places is well established in international law. In this regard, Pakistan played a key role during its non-permanent term in the Security Council in 1968-69. In addition to adopting Pakistan-initiated resolutions 252 and 267, the Security Council also adopted Resolution 271, also initiated by Pakistan, following the burning of Al-Aqsa Mosque on 5th of August 1969. We are also gravely concerned at the continuing expansion of Israeli settlements in the occupied territories and expulsion of Palestinians from their properties. The tragedy of forced evictions from the Sheikh Jarrah neighborhood of Al-Quds al-Sharif is the latest manifestation of the systematic Israeli effort to change the demographic structure, historical and legal status, and Arab, Islamic, and Christian character of Al-Quds al-Sharif. This is patently illegal, immoral, and unacceptable. Excellencies, distinguished colleagues, all necessary steps must be taken for stopping the ongoing aggression against the Palestinian people and their properties. We call for immediate action on the following. 1. The international community must protect the Palestinians against the blatant and illegal use of force and flagrant violation of human rights. It should urgently intervene and take concerted actions to stop Israeli atrocities against civilian population in Gaza. The bombardment in Gaza must be stopped immediately. 2. Implementing forthwith resolutions adopted by the UN Security Council, UN General Assembly, and the UN Human Rights Councils is both critical and urgent. 3. Israel's crimes against humanity should not
escape accountability. There should be no impunity for Israel's violation of international law, including the Fourth Geneva and the various other human rights conventions. 4. Attempts to create a false equivalence between Israel, the aggressor, and Palestinians, the victims, are inexcusable as the collective voice of the Muslim Ummah. The OIC should work in unity to dispel this deliberately deceptive perception. Attempts to silence media and reporting through tyranny, evident from Israel's horrifying airstrike yesterday, bringing down a high-rise building in Gaza that housed media outlets, is unacceptable. The OIC owes its genesis to the Palestinian issue. In this hour of need, the Muslim Ummah must exhibit strong solidarity and support for their Palestinian brothers and sisters. As a member of the executive committee and the next chair of the Council of Foreign Ministers, Pakistan remains ready to join hands with other OIC member states in any move to stop the ongoing bloodshed and restore human dignity and human rights of the Palestinian people in the occupied territories. Mr. Chairman, distinguished colleagues, let me conclude by reaffirming Pakistan's abiding support for the Palestinian people in their just struggle to secure legitimate rights, particularly their inalienable right to self-determination. I also reiterate Pakistan's support for a two-state solution in accordance with the relevant United Nations and OIC resolutions, with pre-1967 borders and Al-Quds al-Sharif as the capital of a viable, independent and contiguous Palestinian state. In the absence of such a solution, any notion of human dignity would remain tainted, regional peace elusive, and international security imperiled. We must not fail the Palestinian people at this critical juncture. I thank you all.